So, hello friends, as you know, we are doing inclusive education paper 16. From this paper, unit 1 completed. Now we'll do unit 2, types and characteristics of children with special needs. Okay, friends. So, from this unit, how many questions we will do? See 2.2, children with physical challenges, visual, hearing, locomotor, and neurological. So from this, we'll study about visual, hearing, and locomotor. Okay, and this one, children with the intellectual challenges. Here, gifted children will do. If possible, autism we will do, and from 2.4 we will do juvenile delinquency. Okay, so 1 2 3 4 5 6 questions we will do. Okay, so before starting class, so hello friends, namaste, I am Namita, welcoming you to my channel, and thank you everybody who are liking my video. जो भी मेरे वीडियो जो लाइक्स कर रहे हैं, हु आर वाचिंग माई वीडियो, उनको मैनी मैनी थैंक्स है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। आपको एक एप्रिशिएशन मिलता है, राइट। सो इसके लिए बहुत थैंक्स है। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जो कमेंट्स कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। सो टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा, एज यू नो, आपको कुछ एक आइडिया होगा, फिजिकल चैलेंज चाइल्ड। ये वर्ड सुन के, लिसनिंग दिस वर्ड, यू हैव सम आइडिया, राइट, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल चैलेंज्ड चाइल्ड। फिजिकली चैलेंज लाइक मीन हमें कुछ लाइक डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, या हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स, सॉरी हैंडीकेप्ड, जो भी हैंडीकेप्ड है या डिसेबिलिटी जिनके हैं, उनको हम लाइक वी आर थिंकिंग अबाउट देम, राइट। सो a child who has disability of locomotor, neurological origin, which see, जिसका भी कुछ भी प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग कुछ भी डिसेबिलिटी है, पैर में, हाथ में, आँख में, कान में, ओके, और मेंटल डिजॉर्डर कुछ भी है, ओके, मेंटल रिटार्डेशन और कुछ डिसेबिलिटी, ओके, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल, कुछ भी हो तो फॉर देम वी आर कॉलिंग फिजिकल चैलेंज्ड चाइल्ड, राइट, और वी आर यूजिंग हैंडीकेप्टेड, right. So they are physically, otherwise mental, sensory or emotional type. This physical challenged child are maybe physical, mental, sensory or emotional. Okay, so what are the types of physically challenged children? Visual impairment, hearing impairment, locomotor disability, child with neurological disorder. See friends, you have idea, right? Visual impairment means they have problem in their eyes. They are unable to see properly, or they are not completely, they are not see. Hearing means they can't hear, they have problem in their ear. Locomotor means problem in movement, हाथ में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम है, they are unable to walk, they are unable to move, they are unable to write. Neurological disorder means it's consists of nervous system. ओके, नर्वस सिस्टम में, इन नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट। सो वन बाय वन वी विल रीड नाउ. Visual impairment. So this question will come in exam. क्वेश्चन आया था कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, ऐसा आया था.
5 mark question. Okay, this may be a question. Okay, characteristics of visual impairment, otherwise characteristics of hearing impairment, characteristics of locomotor disorder. Okay, so this is the question. Okay, so before that we will understand, so what do you mean by visual impairment? Visual impairment is the common term used to indicate any degree of vision loss or loss of vision. Okay, they are unable to see, or they are unable to see properly or happily, partially. So visual impairment includes both blindness or low vision. Visual, what comes in visual impairment, both blindness will come, or लो विजन आल्सो कम अंडर विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है और जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है. Person with Disability Act, PWT Act, Person with Disability Act 1955 uses the terminology blindness. First uses the word blindness and defines it as a total absence of sight. Blindness means total absence of a sight, visual activity not exceeding 6 by 60 or 20 by 200. Limitation of the field of vision sustaining an angle of 20 degree or worse. See, when we are going to eye checkup, वो देखते हैं ना 6 by 6 है या 6 by 18 है और 6 by क्या है, वो चेक करते हैं, राइट? वो प्रॉपरली मुझे नहीं पता है, बट द डिफरेंट टाइप्स आर देयर, राइट? 6 by 6 or 6 by 6 to 6 by 18 is normal. Less than means 6 by 18 to 6 by 60 low vision. Less than 6 by 60 to 3 by 60 blind. Okay, so these are the categories of visual impairment. Normal, what is normal? 6 by 6 to 6 by 18. Low visions, less than 6 by 18 to 6 by 60. Blind means less than 6 by 6 to 3 by 60. Okay, the terminology blindness first used in 1955 Person with Disability Act. So now the important question is characteristics of, write the characteristics of visual impairment. क्वेश्चन भी होगा, मे बी कहाँ होगा मुझे नहीं पता, चलो कहाँ, पता नहीं कहाँ रख दिया. Okay, in next video I will show you the question paper. Write the characteristics of visual impairment. What are the characteristics? Rubs eyes excessively. Rubs eyes, eye rub करना ज़्यादा, eyes excessively. Watery eyes, watery eyes आपको भी पता होगा. और eyelids are often red. Holds object and book too close to the eye. Okay, rub eyes, water eyes, eyelids are often red, holds object और books close to the eye, जो बहुत पास से देखते हैं, head very close to the book, और ये क्या है, sequent, blink more frequently, take help from peers, regular headache, bumps into the objects, poor eye hand coordination. पोर आई, ये इसका मीनिंग क्या है मैं देखूंगी थोड़ा, राइट? स्क्वींस, आई डोंट नो, इफ यू नो प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. पोर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, uncomfortably move head towards and backward while looking at a distance object, loses place while रीडिंग, जब पढ़ते वक्त वाइल रीडिंग एक एक लाइन, 2 लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पहुंच जाना. ओके, प्रेसिंग थ्रू फिंगर्स ऑन द आई बॉल टू सी, पेन एंड इरिटेशन इन द आई, not able to see at night, depending too much on oral information, poor performance in class, poor handwriting, not able to read in poor light condition. These are the characteristics. Okay, very easy, you can read and write. Rub eyes, water eyes, eyelids, object to
book too close to the eyes, head very close to the book, blink more frequently, take help from peers, regular headache, okay, bumps in the object, poor eye hand coordination, unfortunately move head forward and backward while watching. जो दूर डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट देखते हैं तभी हेड को फॉरवर्ड करना, बैकवर्ड करना, लूज प्लेस वाइल रीडिंग, पढ़ते वक्त कुछ लाइन्स और वर्ड छोड़ छोड़ के पढ़ना, प्रेशरिंग थ्रू फिंगर्स ऑन द eyeball, pain, irritation, not able to see at night, poor performance, not able to read in the poor light. Okay, these are the characteristics of a visual impairment. Okay, now write characteristics of hearing impairment. जैसे जो visual impairment में क्वेश्चन आया था, like that we will study right characteristics of hearing impairment. Okay, hearing means problem in ear. Definition: the loss of hearing temporarily or permanently. Okay, ranging from mild to profound and sometimes total. Okay, so what you will write? Loss of hearing temporarily or permanently. Hearing impairment also called deafness, also you can say deafness and hearing loss. There is a problem, if there is a problem with or damage to one or more parts of the ear, जिसके कोई भी ear के कोई भी parts में कुछ problem हो, then also will call it is hearing impairment. Now characteristics of hearing impairment. What are the characteristics? Soft sound can't be heard. Slow में कुछ बोलो तो they are unable to hear. उनको सुनाई नहीं देगा. And soft sound like S P C H से जो word शुरू होता है वो सब उनको सुनाई नहीं देगा. Key parts of a particular speech sounds may not be audible, meaning sounds are mislead, words misunderstand. अच्छे से सुनाई नहीं होगा तो mislead, misunderstanding of words होगा. Sounds are difficult to separate, so voice can be become jumbled with background noise. Okay, so they are unable to recognize the sounds, right? कुछ sounds होगा तो you are recognize ये गाय का, ये गोट का, लाइट अभी जो मेरा जो बेबी है बच्चा, उसको उसका पापा आए तो उसको पता चल जाता है, राइट? कार में आए या बुलेट में आए तो उनका साउंड से वो उसको पता चल जाता है, राइट? यहाँ क्या होगा? दे आर अनेबल, डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द वॉइसेस. हमें पता चल जाता है ना घर में कौन बुलाता है, राइट? पापा बुलाते हैं, मामा बुलाता है और चाचा और चाची हु आर कॉलिंग, वी आर रिकॉग्नाइज, राइट? उनमें से वो प्रॉब्लम होगा. एंड पार्टिसिपेशन इज डिस्कशन, अच्छे से सुनाई नहीं देगा तो हाउ दे विल पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन ग्रुप्स मीटिंग्स बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड. डिप्रेशन होगा, ह्यूमिलेशन, मतलब उनको सुनाई नहीं देगा तो उनमें से एक डिप्रेशन होगा. मैं जब ट्यूशन करती थी शादी से पहले तो उनके घर जाती थी होम ट्यूशन के लिए, तो उन जो उस बच्चे को पढ़ाने जाती थी उनका दादी को मतलब सुनाई देगा, बाकी बहुत ज़ोर से बोलना है. बहुत ज़ोर से बोलोगी तो तब भी उनको सुनाई नहीं देगा, नहीं तो नहीं देगा. तो कुछ भी मैं बोलूँगी, उनके घर जाऊँगी, कुछ में मैं बोलूँगी तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. आपको भी मतलब जो बोल रहा है वो भी बोल के थक जाएगा. अरे कितना बोलूँगी, इनको तो समझ में नहीं आ रहा है. और ह्यूमिलेशन देखो, मजाक करना, लोग मजाक करेंगे, फ्रेंड्स जो है वो मजाक करेंगे, राइट? इसको सुनाई नहीं देगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. ओके, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स. आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. सी, आपको बस समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट यू विल राइट
इन योर ओन वर्ड्स, राइट। जो बुक्स में लिखा है, जो नोट्स में लिखा है, वो हम सारे याद करके नहीं लिख पाएंगे, राइट। सो कुछ भी छूट जाता है तो ठीक है, बाकी पेपर फुल करके आना, ठीक है, तभी मार्क मिलेगा। जितना भी अच्छा पॉइंट्स लिखोगे, फिर भी जो तुम्हारे जो पास में जो फ्रेंड होगा वो ज़्यादा अच्छा पॉइंट नहीं लिख रहा है, बल्कि वो पूरा पेज फुल करके कुछ भी लिख रहा है, तो उनको मार्क आ जाता है, ठीक है। तो आपका एक ही मोटो है कि पेपर फुल करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी. What do you mean by locomotor? See, problem in movement, walking, running. Okay. Definition: locomotor disability is a disability of bones, disability in bones, joints, or muscles, leading to substantial restriction of the movement, unable to move of the limbs. According to RTI Act 1992, a person's inability to execute distinctive activities associated with the moving, जो भी activities है associated with the moving, वो सब वो नहीं कर पाएंगे. बोथ हिमसेल्फ और ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अनेबल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सच इनएबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एफ्लिक्शन ऑफ मस्कुलो skeletal or nervous system. This is the definition according to RTI Act 1992. According to PWT Act 1995, ये जो है ये सेम लाइक दिस, इधर मैंने लिखा है देखो, एज फर्स्ट डेफिनेशन. फर्स्ट जो डेफिनेशन था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्स. दिस डेफिनेशन इज सेम एज अकॉर्डिंग टू PWT एक्ट 1995 में ऐसा ही डेफिनेशन है. ओके, व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्जाम, आपको जो डेफिनेशन है ऐसे लिखना है, हेडिंग देना है डेफिनेशन और कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको थोड़ा हाईलाइट करना है. जो मेन पॉइंट्स है इसको भी आपको हाईलाइट करना है, ठीक है. कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी? पोलियो, cerebral palsy, soft tissues, fracture, injury in spine, ये सब होगा. These are the causes. Because of this, a child unable to move from one place to other place. Okay. Classification. What are the classification of locomotor disability? Neurological means is associated with the nerves due to problems in the central nervous system, brain and spinal cord. Okay. Another one is musculoskeletal, due to defects or disease in the muscles and bones में कुछ problem होगा. Then another one is congenital means born with the defect or malformation of any part of the body. जब by birth only, आप माँ के पेट से ही आपके पैर में या हाथ में कुछ प्रॉब्लम होगा, यू आर अनएबल टू मूव. एक्सीडेंट टाइप्स क्या है? 3 टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स. एक्सीडेंट में इंजरी होगा तो भी क्या होगा? वी आर अनएबल टू मूव. So due to burns, paralysis, polioviral infection leading to paralysis, accident. Okay, these are the types of classification of locomotor disability. Now, what are the characteristics of locomotor disability? Motor weakness or paralysis. Common causes for motor weakness are stroke, cerebral palsy means abnormal brain development. Okay, cerebral palsy, polio, disease of muscles, these are motor weakness. Monoplasia, weakness of one limb. Mono means one, monoplasia means weakness of one limb.
Paraplegia means weakness of both lower limbs, both the legs. Hemiplegia, weakness of one half of the body. Quadriplegia, weakness of all four limbs including trunk. जो पैरालाइज होते हैं उनका लाइक किसका हाथ, किसका पैर, और किसी का दो हाथ दो पैर, ऐसे होता है ना. Spasticity, what do you mean by spasticity? Spasticity means muscles become stiff, जो मसल स्टिफ एंड टाइट हो जाएगा. लाइक जो बहुत ठंड में हम जाएंगे तो तभी क्या होता है, हाथ पैर बहुत टाइट हो जाते हैं, राइट. देन वी आर अनएबल टू मूव, walk. So spasticity means muscles become stiff or tight, which involves difficult to move, walk and speak. Spasticity means increased tone in the muscles. Spasticity means increased tones in the muscles, tension in the muscles. If muscles are spastic, there is loss of power and coordination. This leads to imbalance and development of deformities. This is spasticity. Please remember, first you will remember motor weakness, spasticity. Okay, spasticity means tight, stiffness of muscles. Muscles tight हो जाएगा तो तभी you are unable to move, you are unable to speak. Another characteristic is sensory loss. Sensory loss leads to motor weakness. Loss of sensory awareness. A loss of sensory awareness leads to incoordination. Loss of dexterity. Also cause injury, pressure sores. Okay, sensory loss leads to motor weaks. Motors become weak. Deformities and contractures. Abnormal position. Abnormal position means not possibly corrective. जो possibly not correctable means जो पहले जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जैसे है आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, राइट. फैकल्टी पोस्चर, मस्कुलर, वीक मसल imbalance, gravity faculty, walking pattern, these are come under deformities and contractures. Amputations, what do you mean by amputations? Loss of limbs, loss of limbs due to trauma or disease. ओके, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें से आपका कुछ पार्ट्स जो लिम्स का लॉस होगा. और यूज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स. एम्पिटेशन में क्या आएगा, लॉस ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स. हाँ आशा. न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर एंड बाउल. न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर you know, right? Bladder and bowel problems are common in paraplegia and quadriplegia. These include retention, urine retention, मतलब बार बार यूरिन जाना. लॉस ऑफ वॉल्यूंटरी कंट्रोल ओवर यूरिन, आपको पता नहीं चलेगा कब आपको मतलब यूरिन आ जाएगा. पेन, जो कुछ पेन्स है, जो बॉडी में कुछ पेन होगा तो वो एक वार्निंग है कि समथिंग प्रॉब्लम इन योर बॉडी. लाइक अर्थराइटिस, फ्रैक्चर, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा. एल्बो पेन, नी पेन, ओके, लो बैक एक, स्पॉन्डिलाइटिस means inflammation of joints, soft tissue injury produce pain. So this is all about the locomotor disabilities. Okay, today in this video we studied about 3 questions. Okay, characteristics of visual impairment, characteristics of hearing impairment and locomotor disability. Okay, so friends, thank you. If any doubt, please comment me in the comment box and don't forget to like, share and subscribe. मेरा बेटा जाग गया है, वो रो रहा है, मुझे जाना है. ठीक है, थैंक यू.